Good morning, students. Today our topic is language lab. The topics that we will discuss today under this language lab are: what is a language lab, what are the objectives to use language lab, importance of a language lab at school, and merits of a language lab and demerits of a language lab. So first of all, we need to know what is a language lab. As we all know that there are 4 pillars of language learning: speaking, listening, reading and writing. And we talk about the correct order. First we listen to the language, then we start speaking, and then reading and writing. But that takes place only in the case of the native language. That means the first language of our country or the first language of the person. But when we talk about learning second language, in that situation this order actually sometimes changes. First we read and write, and then we focus on listening and speaking skill. So this is the drawback, and that is why most of the students in India are not able to speak properly, and they are not able to communicate properly. So to develop the listening and speaking aspect of a language, of English language, we have a provision of language laboratory. So this language laboratory is to be set up in a school or even in the teacher training institute also, so that the teacher can be trained how to use a language lab, so that they can use that language lab in their schools, respective schools where they are working. So a language lab, basically what actually is a language lab? So the language lab is a room or a lab that is set up in a school, and it is basically set up to learn a foreign language. So for all of us, we actually learn English as a second language, as a foreign language. So to learn English, this kind of lab is set up in a school, and here the student they can develop their speaking and listening skill, because reading and writing skill the teacher gives lot of practice in the classroom, where each and every student read and write lot of work, but they lack in speaking and listening skill. So speaking means when they are able to communicate, they are able to express themselves to others, and listening means they should be able to listen with understanding. What they are listening, they must get the meaning of what they are listening. So in language lab there is a provision of developing speaking and listening skill. Let us move to the next slide. So what is the objective of a language lab? Why such kind of lab is set up in schools? As I talked to you earlier, as I discussed earlier, first of all, the purpose is to introduce listening and speaking skill in addition to reading and writing skill in the school. So listening and speaking skill can be enhanced using this language, right? And to practice and assess speech in a language, the student get lot of practice, and they can assess their performance, assess their speech performances in this lab. And how they do it? They listen to the model pronunciation. Some recordings are there, they listen to them and they repeat those recordings, and they record that same, and they do the self assessment where they had committed mistake, what were actually the words they did not pronounce properly, and what are the corrections that are required. This person himself or herself self assess his or her performance. And here is a provision that the student, because they are separated with different cabins, so they can learn at their own space. In the classroom there is a drawback that the students, the teacher is not able to focus on each and every student. So the performance of all the students are not developed, because some are slow learners, some are fast learners. So here in that case, the slow learners they actually are not able to get the full advantages of the classroom. But in this kind of classroom, in this kind of lab, each and every student learns at his own pace. Nobody is going to disturb. Next is, what is the importance of a language? As I discussed earlier, a person practice at his own pace. Pace means the speed, at his own speed, and the person identifies the problem areas, and that is more stressed by the teacher as well as the student, and the student develop their language systematically. They get to advance systematically, and nobody is there to interrupt them, so they do not feel shy, and lot of practice sessions
can be organized, so it is good. And the student get reinforcement by listening to their own recording. They get reinforcement where they were lacking. And then the feedback is also provided through continuous assessment. So many assessment exercises are given to the student, and they learn through playway method. So what are the components? How the language lab is set up in a institute or in a school? Three things need to be considered. First is the hearing booth. There must be 16 to 20 booths with table, with seats, and with recording equipments, or with the computers, and all these must be soundproof compartment, and they all are called cubicles, and they are basically hearing booths where the student listen to what is being sent to them to listen. And each cubicle is connected with the console. Console means it is the instructor or the teacher's booth, right? And every student is provided microphone, headphone, and recorder. And in this console, the learner receives the language teaching program, which is actually been designed and selected by the teacher herself. Second thing is the console. Console is actually the room, or the instructor's room, or the teacher's room, the person who is teaching the language to the student. So this is that room. The consoles room जो है, it considers master tapes होते हैं उसमें, distribution switches. Master tapes से वो monitor कर सकता है two-way communication. डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस से जो भी प्रोग्राम रिकॉर्डेड है उसको सारे लर्नर्स तक प्रोवाइड कर सकता है. मॉनिटरिंग स्विच से वो हर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है, हर एक स्टूडेंट को करेक्ट करवा सकता है, उसको एडवाइस कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है कि वो अपने आप को कहाँ पर करेक्ट कर सकेगी. फिर इंटरकॉम स्विचेस भी होते हैं इसमें, ताकि अगर किसी इंस्ट्रक्टर को किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से फ़ोन के थ्रू बात करनी है तो इंटरकॉम स्विचेस से बात करेगी, और अदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस या अदर स्टूडेंट्स की लर्निंग वहाँ डिस्टर्ब नहीं होगी. इसमें ग्रुप कॉल स्विचेस भी होते हैं. इसमें एक टीचर अगर कुछ ग्रुप्स बना सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 16 से 20 ग्रुप्स हैं, 16 से 20 स्टूडेंट्स एक बार में बैठ सकते हैं, तो उसमें चार बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं, और हर एक ग्रुप को अगर कॉल करना है तो ग्रुप कॉल में उन स्टूडेंट्स को ऐड किया जा सकता है. और ऑल कॉल स्विचेस में टीचर जो है अगर हर एक स्टूडेंट से बात करना चाहती है तो इसका यूज़ करती है. तीसरा होता है कंट्रोल रूम. कंट्रोल रूम में सारे टेप, सारे रिकॉर्ड, सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है. हर स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग होती है, हर स्टूडेंट के जो सीडीज़ में वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो होता है, और जो मास्टर टेप्स हैं वो होते हैं, और इसके अलावा भी माइक्रोफोन्स वगैरह एडिशनल इक्विपमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ताकि अगर किसी को कभी ज़रूरत हो तो वो वहाँ से ले सकता है, राइट. सो अगर हमें लैंग्वेज लैब को अच्छे से उसमें एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी है तो वो क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को, किस बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है और कहाँ पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. देन हमें एक करेक्ट टाइप की ड्रिल को फ्रेम करना चाहिए, बनाना चाहिए, और उसी को ही चूज़ करके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स या टास्क देने चाहिए. एंड जो भी बच्चा काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड टेप या सीडीज़ में किसी भी फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है. आई एम सॉरी. और रिकॉर्डिंग्स को भी बच्चा अपनी रिकॉर्डिंग अपने लेवल पर अपने डेस्क पर भी बना सकता है, और स्टूडेंट भी, टीचर भी उसकी रिकॉर्डिंग जो है अपने पास देख सकता है, सुन सकता है उसको, और उसकी रिकॉर्डिंग को चेक कर सकता है, और एंड इस तरह से उसको इवेलुएट कर सकता है. तो यानी कि हर बच्चे की प्रॉब्लम को हमें चुनना है, उसके बाद उसको क्या ड्रिल चाहिए, क्या एक्सरसाइज चाहिए वो देंगे हम, उसके टेप्स, उसके सीडीज़, ये सब हम देखेंगे कि उसने बने हैं या नहीं बने हैं, बनवाएंगे, और रिकॉर्डिंग्स को भी हम बनवाएंगे. उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, और जहाँ कोई कमी है उसको हम बच्चे को करेक्शंस अपनी करने के लिए बोलेंगे. इसके फ़ायदे बहुत हैं. स्टूडेंट अच्छी प्रोनाउंसिएशन सीखता है, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर को सुनता है. कहते हैं ना कि अगर किसी को हिंदी सीखनी है तो इंडिया में आए, उसी तरह से अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो वहाँ के लोगों का जो रिकॉर्डिंग्स है उनको सुने, ठीक है. और तो ताकि वो बच्चा क्या कर सकता है, उसे जो करेक्ट मॉडल ऑफ स्पीकिंग है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उसको बच्चा समझ पाता है और अपने एरर्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है अपनी स्पीकिंग को जो उसने रिकॉर्ड की है विद द जो नेटिव स्पीकर की रिकॉर्डिंग वो सुन रहा है. तो अपनी गलती उसको खुद मिल जाती है, अपनी पेस से सीखता है, अपनी स्पीड से सीखता है, और जितनी मर्जी टाइम वो उसको जो है जब उसको लगता है ज़रूरत महसूस होती है, ही कैन repeat the same, and can go for lot and lot of practice as he desires.
बच्चा the student feels free and confident, gets more time for practice than in the classroom, क्योंकि क्लासरूम में हर टीचर पर इतना ध्यान नहीं दिया जा सकता है, तो वो प्रैक्टिस अपने स्पेस से अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। और नेटिव लैंग्वेज का ज़्यादा एक्सपोजर उसको मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्डिंग, अलग अलग तरह के रिकॉर्डिंग्स वो सुनता है, एंड वो एक एक्टिव लिसनर भी बन जाता है। एक्टिव लिसनर का मतलब है, मैंने फिर आपको बता रही हूँ कि लिसनर का मतलब है कि जो हमारे ईयर्स तक पहुँच रहा है हम उनको समझ सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, right? So he becomes an active listener and the speaker in the language lab. There are certain demerits. First है कि reading and writing skill, there is no scope for developing these skills in the language lab. We actually focus on speaking and listening skill. And if we have a group of 20 students, so that becomes very difficult to accommodate all the students in that language lab, because there is a provision that maximum 16 to 20 students should be there. Next is the competent native speaker speeches are rarely available. We are having a dearth of the original native speakers speeches, so we need to collect them, right? It is a difficult task, and in the rural school installation of language lab is very difficult and costly, because India is not a developed country, it is developing, so we are lacking in resources also. So in that situation it is not feasible, not easy for developing language lab. Yes, our government is trying hard to develop such kind of labs. Gradually will improve in this situation. And then the efficient teachers who can exploit the full possibilities of language lab are rare. We are lacking in the expertise of using language lab. So this was all about language lab. Please like, share and subscribe if you like the video. Thank you.